वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट कनेक्टेड ऐप। ओके, सो पहले क्या था, पहले सेल्सफोर्स ने ऐप मैनेजर के अंदर ही कनेक्टेड ऐप क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दिया था। बट उसके बाद क्या हुआ, जो अपडेट आया था, समर रिलीज हुआ था, उसके बाद सेल्सफोर्स ने वहाँ से मूव कर दिया और वहाँ और दूसरे जगह पे उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे तो हम एक कनेक्टेड ऐप इंटीग्रेशन के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है मेरा ऑर्ग। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सेटअप पे जाऊँगा। यहाँ पे सेटअप पे गया तो यहाँ पे पहले देख लेते कहाँ पे था। यहाँ पे आप मैनेजर अगर सर्च करते ना तो आप यहाँ पे था न्यू कनेक्टेड ऐप के लिए। ठीक है, बट वो रिमूव हो चुका है। अभी न्यू एक्सटर्नल क्लाइंट आप प्लेस कर दिया यहाँ पे। तो अब हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सेटिंग सर्च करना है। सेटिंग में आप देखोगे एक्सटर्नल क्लाइंट ऐप सेटिंग है, राइट। सो जब इसको क्लिक करो ना, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया कनेक्टेड ऐप का ऑप्शन। तो यहाँ पे एक टॉगल दिया गया है, अगर आप एक इसको इनेबल करते हो तो ये इनेबल हो जाता है। उसके बाद आप न्यू कनेक्टेड ऐप क्रिएट कर सकते हो। तो लेट्स क्रिएट ए कनेक्टेड ऐप। सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस हियर, टेस्ट कनेक्टेड ऐप। ओके, contact phone all, oh, enable auth setting. You can enable this one, then you have to just place the callback URL. Okay, so I'm just putting down here. Okay, update added here. Now I'll give the full access currently. Okay. Now all set. Now click on the save. Okay, it will take 10 minutes to effect, so you just wait. Then we are done with the connected app. And if you go to the app manager, then you will able to see here that connected app which we built. test connected app, it's appearing here, right. So if you click on this and view details, you can get the manage the client ID, client secret over here, manage consumer details, and you have to add the verification code. Okay, let me put the verification code. Now this is the consumer key, consumer secret, which we are calling like client ID, client secret. Okay, इसको आप यूज़ करके आप एक्सेस टोकन गेट कर सकते हो। और एक्सेस टोकन के लिए आपको अनदर पैरामीटर चाहिए। क्या है, एक तो कॉल बैक यूआरएल, एक्सेस टोकन यूआरएल, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट एंड ग्रांट टाइप। सो ग्रांट टाइप आप इसको यूज़ करके रिफ्रेश टोकन भी जनरेट कर सकते हो, और या तो यूजर क्रेडेंशियल पे आप एक्सेस टोकन भी जनरेट करते हो। नाउ ऑल सेट।